हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू फूड हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। आज आप देखेंगे कि चिकन टिक्का कबाब कैसे बनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने फूड हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप नए नए वीडियोस देखते रहें। चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस लें। ब्रेस्ट को बीच से स्लाइस कर लें और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब चिकन में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून विनेगर ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। एक टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ऑयल 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। डाइस किए हुए कैप्सिकम 1 कप, आपके पास जो कलर अवेलेबल है वो यूज़ कर लें। ऑनियन 1 डाइस किया हुआ, 1/4 टीस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन को मैरिनेशन किए हुए आधा घंटा हो गया है। वुडन स्टिक को 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें। अगर हम फ्राई करेंगे तो जलने के चांसेस है। अब हम वुडन स्टिक में एक एक करके असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद पैन को प्री हीट कर लें। ऑयल थोड़ा स्प्रेड करें। पैन अच्छे से गर्म होने के बाद असेंबल किए हुए स्टिक्स को रख लें। ऑयल थोड़ा स्प्रेड करें।
हीट को लो कर लें। आठ से 10 मिनट तक पकाते रहें। साथ ही साथ स्टिक्स को टर्न करते रहें। चिकन टिक्का कबाब तैयार है। व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।